तो किसी ने उस वक्त ऐसे एग्रीमेंट्स किए कि स्वेज कैनाल इजिप्ट के लिए ब्लेसिंग की बजाय कर्स बन गई। अगर हमने भी इसी तरह के एग्रीमेंट किए तो एज वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैड सेड कि जी हम पंचर लगाएंगे और चाय पिलाएंगे, तो वी कैन आल्सो एंड अप टू दैट। Hello and welcome to another episode of Alchemy of Transformation podcast, where we go into the essence of why things the way they are. Whether it is about transformation of the self, transformation of organizations, transformation of societies, or transformation of humanity on its own. We ask the very deep, difficult, complex questions that humanity faces in order to go from an industrial to a digital age. One of the things that humanity is confronting with is the new great game, the rivalry between the US and China. Well, this is not the first time that has happened. The great game has been played on for centuries, indeed millennia, between superpowers. Metternich, the Austro-Hungarian foreign policy diplomat, came up with his own strategy called the balance of power, how to get balance between the European powers who were fighting with each other. Then onwards, it was the great game between the Tsarist Russia and the UK and the British Empire. And there onwards, it was for most of the 20th century between Soviet Union and the US. And now we see a rising power called China and its struggle and its fight for supremacy with the established power with the USA. And of course, in between all of that is Pakistan. Pakistan, a very strategically located country, right on the border with China, right on the border with Iran, and with the warm waters of Arabian Sea as well as India, is very critical. Indeed, part of China's strategy for the next century is a project called OBOR, or BRI, the Belt and Road Initiative. And one of the key linchpins of BRI is CPEC, which is the China-Pakistan Economic Corridor. And it was going to define the next stage of Chinese cooperation with multiple countries in order to enhance its influence, but also to uplift some of these countries. I see BRI as nothing less than the Great Marshall Plan. But I'm not an expert. Today we have an expert in this area of CPEC who has done a PhD, who has a thesis on CPEC. But he's more than just an academic. He's an army official of Pakistan who has been a staff officer to army chiefs. He has held key staff and command positions. He was also the officer commanding the 41st division, which is by area, which is the largest command operational of Pakistan Army in Balochistan. He's also held instructional posts in Kakul, which is the Pakistan Military Academy, and other posts that he has held. So we have someone who's very much knows both the micro as well as the macro. He also understands the national security plus the economics plus the business dimension of CPEC. So we have with us someone who has been my instructor, also my teacher at the National Defense University when he was director of ISRA, their think tank, General Samray Salik. General Saab, welcome to the Alchemy of Transformation podcast. Ahmed, thank you very much. It's really an honor for me that you considered me worthy of this discussion. And I'm proud of our association. I will just like to make one correction that I commanded 33 division. These are two divisions in Quetta, and the one I commanded, and indeed it is the one of the largest expanded formation. And I'll also like to thank you for a wonderful introduction that you have given to my career. Absolutely, because I have visited the West Point Military Academy in the US, and there's a library, and it talks about someone called and Thomas Jefferson's quote, and it talks about the intellectual warrior, a warrior who can wage war, but also can think. And that's ultimately the essence of a great army officer who can. And I do consider you, General Saab, as someone who is a thinker, but also a doer.
Let me add here a small anecdote, which actually incident happened with me. I was at NUST and I was sharing a conference. On my one side there was a diplomat, and on the other side there was a academician. And the diplomat, while introducing himself, said that I am an offensive diplomat. And the academician, while he introduced himself, he's used another term which was dichotomous about being an academician. So I told to the audience that the two paradoxical statements have come from both sides. I will also like to make a paradoxical statement. And I said that I am an intellectual soldier. Soldier can either be a soldier or an intellectual. No, but you do get both. I think General Marshall, George Marshall, and others, and it's actually written on the library by Thomas Jefferson that the essence of power is to use less of it. In order to use less of it, you need to use other means for that purpose. Absolutely, absolutely. But in our part of the world, it is considered that the soldiers are not there to think; they just act. So, but anyway, in this modern world, everybody has to have an intellectual domain. Absolutely. So Jan Saab, I think we will go into CPEC and the dilemmas that Pakistan faces will be interesting. But I always start with the self, because in order to understand your views, your thinking, your vision, it's always important to understand the person in the middle of the situation. So tell us about yourself, your upbringing, where you come from, your family. What were the key, experiences of growing up, and how that influenced you, and उन्होंने किस तरह आपकी values को, आपके culture को influence किया? Ahmed, I will start from my birth. I was born in a small village of district Gujarat in 1964. In a very, very, I would say, I come from very humble background. My father had served in army as a soldier. और वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि I was born in 64 until 1980 there was no electricity उस एरिया में. तो 77 में I was doing अपनी स्टडीज में मैं ठीक कर रहा था अपने जो नेबरिंग विलेज में. तो लकीली मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में एंटर होने में कामयाब हो गया. और 77 में आई वेंट टू मिलिट्री कॉलेज जेलम. यहाँ पे मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जब मैं मिलिट्री कॉलेज में मैं रहा हूँ वहाँ पे 3 साल, तो जो मेरे टर्मिनल एग्जाम्स होते थे उसमें मेरी पोजीशन आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 80 यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 30, 31, 32, 33. बट 3 साल बाद जब मैं वहां से निकला हूँ मिलिट्री कॉलेज से मैट्रिकुलेशन के बाद, तो आई वाज सेकंड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जाम. So that is the growth that I had shown in 3 years, from a mid of the class to the top of the class. That gave me a lot of confidence, because आप वक्त के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं. बहुत सारी आपकी हिडन क्वालिटीज होती हैं जो आपको खुद नहीं पता होती. वहां से मैं पीएमए पहुंच गया. पीएमए में मैंने आई स्टार्टेड उसी जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला था. I started doing well and passed out from PMA in 1985 with President's Gold Medal. तब तक मेरे में ये आ चुकी थी कि चीज़ों के बारे में सोच विचार करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और book reading and those kind of things. So I was little different than, let's say, a normal cadet. तो उसने मुझे रिवॉर्ड भी किया. I entered into army life in 1985, had various assignments, but all along मुझे मेरा एक नैक बन गया था कि जब भी मैंने कोई एकेडमिक्स की चीज को याद करना है तो मैं उसको रटा नहीं लगाता था, बल्कि उसके पीछे लॉजिक तलाश करता था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, व्हाई इट इज लाइक दिस. तो वो जब आपको लॉजिक की समझ आ जाए तो फिर आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. हमेशा से मेरा यही होता था. आई वॉज लकी टू लैंड इन द हैंड्स ऑफ कॉम्पिटेंट सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया. मुझे उन्होंने बुक सजेस्ट की. एंड सिंस आई वॉज माई सेल्फ वेरी कीन, तो वो किताबें जो मुझे वॉर कोर्स में काम आई वो मैंने एज ए कैप्टन पढ़ी हुई थी. थैंक्स टू ब्रिगेडियर नजम सलीम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिन्होंने मुझे उस ट्रैक पे चढ़ाया. तो फिर जो मिलिट्री कैरियर में वेरियस कोर्सेज किए, स्ट्रक्चरल अपॉइंटमेंट्स की, और वो जो मेरा अपना एक फ्लेयर था टू बी एनालिटिकल एंड टू बी एनालाइजिंग वेरियस थिंग्स, वो कुछ मेरी खुद चलती रही, कुछ मेरे रास्ते में ऐसी चीजें आती रही, लाइक एल्केमिस्ट, the book, like Awaken the Giant Within, number of books which transformed my career, number of personalities which transformed my personality, and that is how. Sorry? Anthony Robbins, Awaken the Giant.
Anthony Robbins, Awaken the Giant Within, and Ultimate Power, and those things. So what I want to say is that my personality continuously transformed. Got an opportunity to work with General Musharraf, which gave me wonderful exposure of, let's say, White House and 10 Downing Street and King's Palaces and those kind of things. So ये सारी चीजों ने add किया मेरी personality में. फिर मुझे option मिली to work in War on Terror. जब मैं मीरान शाह चला गया और वहां पे मैंने live actions देखे. So then it became a good combination of action and analysis. दोनों की चीजें जो है वो combine हो गई. NDU में मैंने पढ़ाया 2 साल. Had the opportunity to serve an command an infantry division. फिर अल्टीमेटली जब मुझे नजर आया कि अब मुझे आई एम अबाउट टू रिटायर, तो मैंने आई ऑप्टेड टू डू अ पीएचडी. और मेरी मोटिवेशन पीएचडी थी 3-fold थी. एक तो मैं पीएचडी को कंसिडर करता हूं दिस इज द कंटिन्यूइंग सीकिंग एक्सीलेंस, और आई कंसिडर पीएचडी एज माउंट एवरेस्ट ऑफ नॉलेज. कि आप जब माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग देयर टू गेट अ मेडल, यू आर गोइंग देयर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट. आप फील करते हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है. सेकंड था कि आई नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ नेशनल कॉज. क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब मैं जीएचक्यू में सर्व कर रहा था कि सीपैक इज कमिंग अप एज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, तो उसके ऊपर आई ऑप्टेड टू डू द पीएचडी. इसके ऊपर आगे मजीद भी बात करेंगे. और आई रियली एंजॉय माय फ्लेयर एंड माय propensity to go deep into things and analyze various issues. Excellent. I mean, and that's a mashallah, and that also shows how good education, good experience leads you from Jhelum, from a village in Jhelum to 10 Downing Street. And indeed, it's both God's will and one's hard effort and the praise of the parents and everyone for to achieve such success. So early on in your career. It is quite in 80s to be thinking about these matters, like Anthony Robbins ko padhna. These things became popular globally much later on, even in the West, 1990s, maybe 2000s. So how did you nurture this thinking within a very strict structure, hierarchy? आपने उसको किस तरह nurture किया और आपने किस तरह किया कि उसको आप अपने अंदर भी प्रमोट करें, अपने इर्द गिर्द भी उसको प्रमोट करें? देखिए, बात यह कि जो आपकी पर्सनल स्टडीज है वो तो साइड बाय साइड चलती रहती है. अगर मैं आपको बताऊं कि स्टीफन हॉकिंग की जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो मैंने 1988 में पढ़ी थी. और द फर्स्ट कंप्यूटर दैट आई बॉट वो था 1986 में. तो इट वाज एप्पल क्रिएटेड बाय पाकिस्तान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी व्हिच वाज अ वर्जन ऑफ कमोडोर. तो ये वो चीजें थी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी चल रहा था. अगर मैं मूवीज भी देखता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज देखूं, ना कि मैं वो मूवीज देखूंगे जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है. तो हर जगह पे मेरी कोशिश होती थी कि मैं आई शुड सीक नॉलेज एंड आई शुड सीक एक्सीलेंस. शुरू में वंस आई वाज इंस्ट्रक्टर एट पीएमए, आई वाज अ कैप्टन. तो वहां पे एक डॉक्टर वाहिद थे, वो हमें टॉक देने आए विच वाज ऑन सीकिंग एक्सीलेंस. और उन्होंने यही कहा कि एक्सीलेंस को सीख करना हमारा प्रोसेस शुड नॉट एंड टिल ग्रेट. सो दैट बिकेम माय पैशन. और मैंने हर चीज में फिर कोशिश की कि आई ट्राई टू सीक एक्सीलेंस. तो ये जो मेरी प्राइवेट स्टडीज थी, जैसे मैंने कहा आपको, मैंने आज जिक्र किया ब्रिगेडियर नजम सलीम का, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे. उन्होंने मुझे वंस आई वाज लेफ्टिनेंट, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई गिव यू 3 ऑप्शंस, यू पिक एनी वन. वन इज मिलिट्री हिस्ट्री, सेकंड इज वेपन्स एंड आर्म्स, एंड थर्ड इज टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी. तो मैंने उन्हें कहा सर मैं पिक करूंगा टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी. तो ही गेव मी अ लिस्ट ऑफ 12 बुक्स कि ये आप पढ़ना शुरू कर दें. और आप यकीन करें, मुझे उस वक्त उन बुक्स की कोई वैल्यू का पता नहीं था. बट जब वंस आई लैंडेड एट वॉर कोर्स, आई रियलाइज कि मेरे जो कलीग्स थे जिन्होंने आज तक उन बुक्स को नहीं पढ़ा था, मैंने उन्हें एज कैप्टन पढ़ा हुआ था. तो ये जो मैंने किताबें पढ़ी, इन्होंने मेरे माइंड को एजिटेट किया टू एक्सप्लोर मोर. तो वो फिर आप ऑटोमेटिकली, मैं बिलीव करता हूँ कि मैनी अ टाइम जब आपका एक पैशन होता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो चीजें हैं वो दे फ्लो इन योर वे, दे रन इनटू यू. कई दफा मेरे साथ हुआ है कि मैं एक चीज के बारे में मैंने एक सोचना शुरू किया, डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ. तो मैंने किताबों में एक्सप्लोर करना शुरू किया. बर्ट्रैंड रसल की वो बुक देखी हैप्पीनेस, कुछ नहीं मुझे मिला. एंड आई थिंक विद इन कपल ऑफ मिनट्स आई रैन इनटू एन आर्टिकल which was exactly on the same topic.
कि डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ। तो ये वो चीजें हैं जो कि ऑटोमेटिकली फिर आपको वो जो है ना उस साइड पे ले जाती हैं। So जब आप strategy and tactics, so did you read like people like Clausewitz or Little Hart? उनमें से कौन आपका favorite, अगर even military history या tactics की तरफ देखें, who was your favorite author या कौन सी book आपको ज्यादा influence किया था? देखिए जो क्लॉसविट्ज एंड जोमेनाई, दे आर टू जेंटलमैन हु आर नोन एज इंटरप्रेटर्स ऑफ नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन वाज अ ग्रेट वॉरियर, अ कैप्टन ऑफ वॉरफेयर, लेकिन उसने एक वर्ड भी अपनी तरफ से नहीं लिखा। उसकी जो थ्योरीज को, उसके कॉन्सेप्ट को जो लोग इंटरप्रेट करते रहे हैं वो जोमेनाई और नेपोलियन क्लॉसविट्ज थे। तो साइंस जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें एवोल्यूशन होती रही, कभी साइंस ने डोमिनेट किया, कभी आर्ट ने डोमिनेट किया। साइंस जो थी दैट इज क्वांटिफाइड, वेपन्स इतने हैं, टैंक्स इस तरह के हैं, गन्ने इस तरह की हैं। आर्ट ये है कि लीडरशिप क्या है, मनूवर कैसे हो रहा है, हाउ यू आर प्लेइंग अ ट्रिक विद योर एनिमी, ये आर्ट है। सो जोमेनाई जो था दैट ही बिलीव्ड मोर इन साइंस, वेयर एज क्लॉसविट्ज बिलीव्ड मोर इन आर्ट। तो ये जो वॉरफेयर है इसमें चेंजेस आती रही हैं। आजकल के दौर में वॉर ऑन टेरर जो है इसमें साइंस जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है। ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, उस तरह की चीजें हैं। जब टैंक वॉरफेयर थी जिसने कल्बिनेशन देखी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो नेपोलियन के टाइम पे भी मनूवर्स वगैरह आ गए थे, तो क्लॉसविट्ज ने ज्यादा फोकस किया आर्ट के ऊपर। सो देवर पीरियड्स जहाँ पे के एक पीरियड है कि जहाँ पे एक वो टाइम था जब कोई मिलिट्री कमांडर जो है वो जोमेनाई के बुक के बगैर वॉरफेयर में नहीं जाता था। जब टैंक्स ये आ गए, टैंक्स और मनूवर्स आ गए, तो कोई भी नहीं क्लॉसविट्ज के बगैर नहीं जाता था। बट लिटिल हार्ट अगेन अ ग्रेट नेम, जिसने इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी वगैरह की बातचीत की। तो these scholars they have their own value in life, but I think कि अगर मैं जो रेलेवेंस देखा जाए, आज भी मैं जिनको मैं कोट करता रहा हूँ, तो I would call Clausewitz. Clausewitz is fantastic, yes. और उस टाइम में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बोथ मैनूवर्स हो रही थी, एंड टू कंबाइन द टू टुगेदर इज नॉट was very challenging. But this is a topic that I'm very fascinated with, and although I'm not a military person, but I think military strategy और tactics को हर बंदे को पढ़ना चाहिए। बिजनेस में, काम में होना में बहुत इस्तेमाल होता है, and I think we can have a separate podcast just talking about the strategies and Clausewitz. But I think उससे ज़्यादा we have to go towards CPEC and closer to home our situation. But उससे मैं एक ट्रांजिशन करूंगा कि आपकी वजह से एक क्वेश्चन, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन एग्जांपल्स. One of the things which we live in Pakistan is how military is dominant of our both political, foreign policy and national arena, and there are many reasons for it, and everyone has their own theory. One of the reasons that I have, and because I come from a military family and I've seen it, is the training and development and instruction that a military officer goes from, being a cadet to going to the top major general and lieutenant general. So आप मुझे जरा थोड़ा सा अपने perspective से बताएं, because not many people know about it, the kind of training that you went through and the different exposure that you had, and how was that influential, and how that actually leads to becoming a good leader. And I always say the reason why military dominates is because it has got a better HR system and a better meritocratic promotion system and a training and development system. So their leaders dominate the leaders of other spheres. But that's a political question. I would like to know more about your own experience of the training and development you received in the military. Wonderful question. अहमद, मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि हर किसी को पता है कि आर्मी का एक एग्जैजरेटेड रोल है सोसाइटी में, लेकिन हमें जवाब ये तलाश करना चाहिए कि एग्जैजरेटेड रोल क्यों है। सो व्हाई क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, व्हाट जो है वो तो सबको पता है कि जी आर्मी का एग्जैजरेटेड रोल है। मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान हैज रिमेन्ड एज अ सिक्योरिटी स्टेट फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। आई वुड से कि इंटायर 75 years में पाकिस्तान हैज रिमेन्ड एज अ सिक्योरिटी स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अराउंड पाकिस्तान जंगें रही हैं, लड़ाइयाँ रही हैं। तो जब इस तरह की इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की होती है तो प्रेडोमिनेंट रोल आर्म फोर्सेस का होता है। मैं बड़ी एक क्रूड एग्जांपल देता हूं कि मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा, उसका नाम है अली। मैं ये कह दूं अपने घर में कि अली विल कॉल ऑल द शॉट्स, अली विल डिसाइड कि खाना क्या बनेगा, अली विल डिसाइड गाड़ी कौन सी यूज होगी, अली विल डिसाइड कौन कैसे कपड़े पहनेगा,
अली विल डिसाइड कि किस तरह का फर्नीचर होगा, तो अली इज बाउंड टू हैव एन एग्जैजरेटेड रोल। वो अली उन चीजों में भी घुसना शुरू कर देगा जिसमें उसका परव्यू नहीं है। तो चूंकि सिक्योरिटी स्टेट रही है, तो ये जो आर्म फोर्सेस है, उनको जब एग्जैजरेटेड रोल मिला तो उन्होंने उन एरियाज में भी घुसना शुरू कर दिया जिनमें उनका नहीं बनता था। एक तो ये डायमेंशन है। सेकंड ये है कि ये जो रिपीटेड हमारी जंगें रही हैं, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, इससे हमारे जो सिविल अदारे हैं उन्होंने ग्रो नहीं किया। जब उन्होंने ग्रो नहीं किया तो somebody else who would fill that vacuum, and that was armed forces. Now coming to the point जो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए चाहे हम सोल्जर हैं, चाहे हम सिविलियन हैं, जो भी हम हैं, जो बेसिक हमारी सोच है दैट हैज टू बी करेक्ट। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो मुल्क है वो इस तरीके से चलते हैं कि जो भी आपका टॉप मैन है वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑन विच वी हैव टू प्रोसीड। हमारे जैसे कंट्री में ये हो रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने मदीना की रियासत बनानी है, तो हम टीवी जो है वो ऐसे ड्रामे दिखा रहा है जो कि बिल्कुल हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। सो जस्ट सी कि जो डायरेक्शन मिली है, चाहे अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, everybody has to take that line. अगर if we respect our institutions, if we respect our elders, तो मैं पाकिस्तान को कहता हूं कि it is a flotilla of rudderless ships. हर किसी ने अपनी अपनी लाइन पकड़ी हुई है। मीडिया अपनी लाइन पे चल रहा है, मिलिट्री अपनी लाइन पे चल रही है, पॉलिटिक्स अपनी लाइन पे चल रहे हैं, एंड nobody is bothered कि what is our actual line जिसके ऊपर हमारे मुल्क ने जाना है। सो ये दिस इज आयरॉनिक। इस तरीके से मुल्क जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। It's like a warring tribes, judiciary versus civilian versus political families versus business versus media, and of course the establishment. हर कोई अपना कोई cohesion नहीं है। And बहरहाल, it's also the case that most nations start like that. They are different tribes, different groupings with different interests, and then somehow one person or one organization takes the lead, and they, through either force or cunning or politics, they are able to forge a nation together, to bring all the warring tribes into a single fold, and that's how nations are formed. चाइना के 7 ट्राइब्स थे। वो उनकी किन डायनेस्टी ने, उनका जो बादशाह था उसने उनको डिफीट किया, पहले 6 ट्राइब्स को, एंड देन यूनिफाई किया, और आज तक वो यूनिफाइड है। आप जानते हैं कि जुडाइज्म में 12 ट्राइब्स थे, तो किंग सॉल और हजरत दाऊद ने उनको यूनाइट किया। इसी तरह स्वीडन की हम बहुत मिसाल देते हैं। स्वीडन इज अ वेरी sophisticated and very civilized democratic country, तो आज से 500 साल पहले they were ruled by Denmark, और उनके भी बहुत ज्यादा ट्राइबलिज्म थी, until a guy called Gustav Vasa defeated internal tribes and then forged a nation जो आजकल चल रही है। आप बेशक अतातुर्क को देख लें, आप बेशक माओ को देख लें, आप एक तरह से ली कुआन यू को देख लें, जनरल पार्क को देख लें साउथ कोरिया में, उन्होंने किसी ना किसी तरह से एक यूनिटी ऑफ कमांड एक बनाई है और एक फोर्स किया है, चाहे वो सिविलियन महातिर हो या वो जनरल पार्क हो। ये एक प्रोसेस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये नहीं होता तो वो लिटरली दे वुड हैव फॉलन अपार्ट जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और बहुत मुझे भी नॉलेज दिया है। आई डिडंट नो अबाउट चाइना, आई डिडंट नो अबाउट स्वीडन। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये काम तब होंगे जब एक नेशनल अप्रोच आएगी, जब हम अपने कायदे आजम की जो फरमुदात है उसके मुताबिक सबसे ऊपर पाकिस्तान को रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा श्रीलंका की। श्रीलंका ने 27 साल जंग लड़ी तामिल्स के अगेंस्ट, और फाइनली जब वो जंग उन्होंने जीती है तो दैट वाज वन ऑन द बेसिस ऑफ राजा पक्से मॉडल, हु वाज देन प्रेसिडेंट। Fonseca, General Fonseca was the chief of army staff, Raja Pakse was the president. तो राजा पक्से मॉडल के there are 8 principles at that model कि क्या हमने करना है और कैसे करना है। Number 2 principle of that model says that hell with the word, we will do what is right for our country. Almost इसी तरह के अल्फाज हैं उसमें, hell with the word, we will do what is right for our country. तो let's have first a leader, an organization, एक अदारा कोई ऐसा हो
जो पाकिस्तान में आके कहे कि हेल्प विद द वर्ड, मैं वही करूंगा जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है। जब तक ये चीज नहीं होगी तो फिर वो जो आप ऑब्जेक्टिव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त तक हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है। मेरी पार्टी का क्या होगा, मेरे अदारे का क्या होगा, मेरी लीडरशिप का क्या होगा, बच्चे उस का सारे क्या? प्रोसेस में पाकिस्तान सफर कर रहा है। हम अपनी मोरालिटी ऑफ डिसीजंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं इस वक्त। हम मोरालिटी के लिए हम उसको साथ रखते हैं, हम कह रहे हैं व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। और श्रीलंका में जनरल फोंसेका एंड Rajapakse, of course, they were under huge pressure of the West, Norway or US में कि they don't take the final stance, जो जाफना में ना जाते, मगर they did what was in the interest of the country. They personally suffered for as a result of it, but ये है कि they acted in the interest of their country. Absolutely. और मैं भी I am wishing for a leader in Pakistan who will say that I will do what is right for my country. I will not consider कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहेंगे तो यूरोप क्या कहेगा तो अमेरिका क्या कहेगा. I will do what is right for my country. Getting back to this concept, the military's training, what it takes to take a cadet from, you know, a second lieutenant all the way up to a senior official. So what are the different trainings, duration, and what are the different components of the training that a military officer goes through? I think it's a fascinating topic. I find it very interesting because the training of how do you become a leader, and particularly in Pakistan, where most of the other places, leaders just land up at the top of the system, either because of their family or other reasons, and never go through a process of sifting, whether you call it ACRs and the different stages of exams and training that they go through. So, आप जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं so that we understand how military officers are made. देखिए, मैं जो ट्रेनिंग है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. वन इज द बेसिक ट्रेनिंग, second is the mid career training, and third is the final training. जो बेसिक ट्रेनिंग है वो शुरू होती है पीएमए से. पीएमए इज 2 years कोर्स जिसपे कि 6 माह की 4 टर्म्स होती हैं. That is your first termer, second termer, third termer, and final termer, and then you pass out. पीएमए ट्रेनिंग को मैं डिफाइन कर विलियन पर्सनालिटी इनटू अ मिलिट्री पर्सनालिटी, जिसमें के उसको जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एक सोल्जर के लिए है, एक ऑफिसर के लिए है, टू कन्वर्ट अ पर्सनालिटी इनटू अ जेंटलमैन एंड एन ऑफिसर, जो कि बहुत बेसिक नेचर की होती है. हाउ टू डाइन इन द मेस, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू मूव अराउंड, हाउ टू कमांड, हाउ टू लीड, हाउ टू हैंडल अ वेपन, हाउ टू कैरी आउट टैक्टिक्स. बहुत ही बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होती है. एंड दैट इज सबकी एक जैसी ट्रेनिंग है. में जा रहा है कल को, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग वही है. वहां से जब लोग निकलते हैं तो फिर उनको दे गेट गो टू रिस्पेक्टिव यूनिट्स, और फिर यूनिट्स के अपने अपने स्कूल हैं. आर्मर का, रसाले का, टैंक्स वालों का अपना, ऑर्डिनेंस वालों का अपना स्कूल है, आर्म्स. फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है अपनी आर्म्स से स्पेसिफिक. आर्टिलरी वाले ने बिसाइड्स राइफल तोपें चलानी है, टैंक वाले ने बिसाइड्स राइफल टैंक चलाना है, तो उनको टैंक, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस, उस तरह की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. वो भी अगेन आई वुड कॉल इट एज द बेसिक ट्रेनिंग, कि एक ऑफिसर जब अपनी यूनिट में गया तो इनिशियल उसकी ट्रेनिंग है हाउ टू फंक्शन इन दैट आर्म. तो उसके बाद जब ऑफिसर 7-8 साल की सर्विस कर लेता है तो उसकी मिड कैरियर ट्रेनिंग शुरू होती है. दैट इज लिटिल हायर लेवल. अगेन इसमें स्पेसिफिक टू आर्म भी ट्रेनिंग होती है और जनरल लीडरशिप ट्रेनिंग भी होती है. और वहां से उस मिड लेवल ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर चला जाता है स्टाफ कोर्स में. स्टाफ कोर्स जो है दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जैसे सीएसएस का एग्जाम सिविल में है, उसी तरीके का स्टाफ कोर्स का एग्जाम है कि बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके लिए इधर मैंडेटरी हैं या आपका जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है उसकी बेसिस पे आप वो कोर्स करने जाएंगे. लेकिन जो स्टाफ कोर्स है यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है. यहाँ पे एक एग्जाम में अपियर होंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपका मेरिट बनेगा, ओनली देन यू विल गो फॉर द कोर्स. सो इट इज अ कॉम्पिटिटिव कोर्स.
स्टाफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, और अगेन स्टाफ कोर्स का मैं डिफाइन करूंगा ग्रूमिंग ऑफ द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जो बटालियन कमांडर्स होते हैं, जिन्होंने कल को ब्रिगेड कमांड करने हैं, उनकी वहां पे ग्रूमिंग होती है, और उनको बिसाइड्स टैक्टिक्स थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेटेजी का भी पढ़ाया जाता है। वहां से लोग जब निकलते हैं तो दे डू अपने वेरियस असाइनमेंट्स, और वंस दे आर सीनियर कर्नल्स एंड सम ऑफ देम ब्रिगेडियर्स, तो वो फिर करते हैं वॉर कोर्स। ये जो वॉर कोर्स है ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये वॉर कोर्स सिलेक्शन बेस्ड है, कि जो लोग जिन्होंने जितनी भी कैरियर आपने किया है उसमें जो आपका मेरिट बना है उस पर बेस करते हुए आपको जीएचक्यू सेलेक्ट करेगा कि आपने वॉर कोर्स करना है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। सो दैट मीन्स जो वॉर कोर्स के लिए जा रहा है, इसका मतलब है उसका पीछे का कैरियर इज फेयरली वेरी साउंड। सो वॉर कोर्स पे चले जाते हैं अराउंड 100 ऑफिसर्स इन टोटल, वेयर एज जो स्टाफ कोर्स कर रहे हैं दैट इज समथिंग लाइक 400-500 ऑफिसर्स। ये जो वॉर कोर्स जब करते हैं, दिस इज द फाइनल कोर्स दैट आर्मी जो करवाती है। इसमें आपको फिर हार्ड कोर स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है। इसमें एक पार्ट उसका है जिसमें नेशनल फंक्शनिंग है, क्योंकि अनलेस अ सोल्जर नोज कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे फंक्शन करती है, फॉरेन पॉलिसी कैसे फंक्शन करती है, तो ये सिविलियन कंपोनेंट को ला के आर्मी ब्यूरोक्रेसी वो आके कोर्स करते हैं मिलिट्री के साथ, और वो 6 माह का ये कोर्स करते हैं। सेकेंड हाफ जो साल का है, नेक्स्ट 6 मंथ, उसमें प्योर नहीं होती है कि जंगें कैसे लड़नी है। सो दिस इज द फॉर्मल ट्रेनिंग दैट वी हैव इन आर्मी। बिसाइड्स दिस आपकी यूनिट्स में ट्रेनिंग एक्टिविटीज चल रही होती हैं, आपकी इनफॉर्मल ट्रेनिंग चल रही होती है, आपके वॉर गेम्स हो रही होती हैं, आपकी डिस्कशन चल रही होती हैं, वो जो है वो साथ 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 वो चीजें भी चल रही होती हैं। You know, this reminds me of आपको पता है कि the functioning of state which is very efficient is the Communist Party of China. And there they have a system where people start from a very local government, municipality level, and then they're given both experiences and exams to rise to a district government, and from district government they rise to a provincial government, and then to a national level government, and then eventually they become part of the Politburo, और उनमें से 7 बंदे होते हैं जो executive committee के बनते हैं, and they are the ones who are the decision makers. But you go through this whole training process of 30 to 40 years or experience to get to the top. And nobody is such that के वो on day one हरफे कुल हो के उनको सब कुछ पता हो कि they can become a leader and just parachute to the top of a system and become a leader on day one without being groomed through it. कि जिस तरीके का सिस्टम मिलिट्री में है कि एक स्टेज वाइज ट्रेनिंग है, इस तरह का सिस्टम आपको सिविल अदारों में नहीं मिलता। बैक इन 19 I would say General Zia's time, I remember के प्राइम मिनिस्टर जुनेजो ही केम टू GHQ, और उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी कि हम किस तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं फॉर ऑफिसर्स असेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें उसी सूरत में होंगी जब जो करने वाले हैं दे विल सी एज देयर इंटरेस्ट। अगर हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स, अगर हमारे रूलर्स, दे डोंट थिंक कि देयर इज अ नीड फॉर अ जुडिशरी गाय टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग, देयर इज अ नीड फॉर अ ब्यूरोक्रेट टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग, देयर इज अ नीड फॉर अ पॉलिटिशियन टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, अगर उन्हें ये जरूरत नहीं महसूस होगी तो ये नहीं होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली द इशू। हमें रादर सूट करता है कि एक जो बंदा लॉयल है वो बैंकर बैठा हो, एक जो बंदा लॉयल है वो मेरा, तो अगर हम इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी जो हम डिजायर कर रहे हैं, जो कि चाइना में हो रही हैं। Yeah, absolutely. मेरिट एंड प्रोसेस सिस्टम, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो आपने इसका दी है कि फौज में एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का सिस्टम है, प्रमोशन का सिस्टम है, बाय एंड लार्ज मेरिटोक्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कमिंग बैक टू योर करियर, देयर इज समथिंग दैट यू डिड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज यूएन पीस कीपिंग। आई थिंक आप उसमें आप इन्वॉल्व थे। मेरी पिछले दिनों एम्बेसडर मलिहा लोधी से बात हो रही थी, एंड शी सेड कि बेसिकली ग्लोबली इन द यूनाइटेड नेशंस यू कैन नॉट विन ए सीट, यू कैन नॉट विन ए लाइक यूएन की काउंसिल में आप जीत नहीं सकते जब तक आपको अफ्रीका की सपोर्ट ना हो। हमारे मुल्क में द मोस्ट engagement that we've done with Africa is in UN peacekeeping. So tell us about your UN peacekeeping experience. Which country were you part of? Where were you
And how was, projecting Pakistan as a peacekeeper? How was that positive for the image of Pakistan? अहमद, मैं 1997 में फॉर 1 ईयर मैं गया था मोरक्को में. मोरक्को में देयर इज अ मिशन नोन एज मिनूर्सो. और मोरक्को जो है इसने इंडिपेंडेंस हमारे से बाद में लिया था. आई थिंक इट वाज इन 53 एंड दे गॉट दिस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच. जो मोरक्को का एक एरिया था विच वाज स्पेनिश कॉलोनी, उन्होंने 73 में प्रोबेबली विच वाज वेस्टर्न सहारा इंडिपेंडेंस लिया था फ्रॉम स्पेन. तो ये जो एरिया था विच वाज वेस्टर्न सहारा, it became disputed between various countries, surrounding countries. That was Morocco, Algeria, Tunisia, there was another country, and the locals. जो locals थे उन्होंने movement शुरू की for their independence. तो जो बाकी country थे, Algeria and another country, I'm forgetting the name, उन्होंने because of being poor country, they surrendered their claim on Western Sahara. So Western Sahara was left as a contention between the locals, which were known as Polisario, and Moroccans, which said that this is our part. तो इसका जो nature था, it was something like Kashmir. तो for 1 year I stayed there. पाकिस्तान के बहुत थोड़ा नंबर था वहां पे. We were only 5 observers from Pakistan जो कि वेस्टर्न सहारा में थे, but highly respected. मैं आपको बताऊं कि वहां पे जनरल बर्न लोबनेक वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वाज फोर्स कमांडर. जिस दिन मैंने जाके रिपोर्ट की है तो जनरल बर्न लोबनेक ने मुझे कहा कि आई वांट टू कीप यू इन माय हेडक्वार्टर. तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे डेजर्ट में जाने दें, लेट मी सर्व देयर इन द फील्ड, ओनली देन आई विल बी एबल टू सर्व इन हेडक्वार्टर. क्योंकि मुझे फील्ड की जब तक प्रॉब्लम्स का नहीं पता होगा तो मैं कैसे ऑपरेट करूंगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कभी कभी कंपल्शन होती है दैट वी हैव टू डू इट. मैंने कहा स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू कि मुझे फॉर शॉर्ट टाइम लेट मी गो टू द फील्ड. So I was sent to the field. I served there for 3 months, and I was called back to the headquarters. So it was a very good experience. और we represented Pakistan. ये वो मिशन है जिसके पहले जो SRSG थे, फर्स्ट वन, वो पाकिस्तानी थे, and he was जनरल साहबजादा याकूब. अल्लाह में bless his soul. और जनरल साहबजादा याकूब को किंग ऑफ मोरक्को ने रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजी पढ़ाएं, where his son, who is the future heir of the throne, he will also be part of the student. So part of the class. So General Sabda Yaqub ne refused kar diya tha. He didn't teach there. So that is the kind of respect that Pakistan had over there. Of course, and Africa is very important, growing in importance. Africa is growing in importance, and what we need is more engagement. And unfortunately, हमारी diplomacy इतनी active नहीं है Africa में. But of course, our peacekeeping is, whether it is in Rwanda, Sierra Leone, other places. And I think that gives a very positive image of Pakistan. So thank you for doing that for the country. And coming back to also your career at the GS branch, the central, as you call the CGS, is the Chief Operations Officer of the Pakistan Army. And you were the VCGS. So tell us about that period and being part of the central organizational command of the Pakistan military. Tell us some of the experiences that you had while being the VCGS there. Okay, now the GS branch is the main branch of army, which you can say that is deals with the operations, how the army has to fight. The second main branch is the administrative branch, where all the administration and those kind of things are held. So GS branch is headed by the Chief of General Staff, who's a 3-star. And with him, there are two stars. One is VCGS, Vice Chief of General Staff Alpha, and Vice Chief of General Staff Bravo. So almost for 2.5 years, I was Vice Chief of General Staff Bravo. It was one of my responsibilities to manage the GHQ troops, which involves Army Aviation and Special Services Group. It was a very, very good experience serving at the highest possible position in the nerve center of the army. And it was great learning, good experience. And it was that exposure, coupled with my exposure, जो से पहले था, spanned over something like 15 years, जिसने मुझे enable किया to write a book on terrorism, which is Fighting Shadows. And I know that you are aware of that. Yes. हाँ, तो आप बता रहे थे वो you were part of the VC in that aviation के लिए और जो है
SSG के लिए, तो वहां पे you looked after that in that period. जी बिल्कुल बिल्कुल, एविएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्म ऑफ आर्मी, helicopters, aircrafts, drones, those kind of things. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जाहिर है जो एक किसी आर्म को मेंटेन करने के लिए कोई नया इक्विपमेंट आ रहा होता है, मौजूदा इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, तो उस तरह की चीजें। एंड सेकेंडली जो हमारी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो इट वाज अ वेरी वेरी मैटर ऑफ प्राइड एंड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मुझे एक्सपोजर वहां पे जो मिला। And of course, very critical, because that's where the GHQ, the command control system works. And as they say, that the night that the coup of 12th October took place, of course, the SSG had a very important role to play in it. So I'm sure it was the Bravo which moved it. एब्सोल्युटली, इफ यू रिकॉल जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था एपीएस का, जी जी जी। तो both these elements were used. Helicopter was used to transport SSG, and SSG was used to carry out that operation. तो बड़ा एक मतलब वो हैपनिंग प्लेस थी। Absolutely. So from the happening place of the field, from the war on terror to a PhD. So tell us about the thesis of your PhD. What was the what was the process of doing it, going through it, whether it was researching here or in China, and then what was the overall conclusion? We are just limited to the PhD at the moment, and then we'll look at what actually unfolded in case of Pakistan. A very interesting question. It was 2015 कि मुझे एक डिजायर हुई कि आई मस्ट स्टडी अबाउट CPAC। तो मैंने जो अपनी इनफॉर्मल स्टडी थी CPAC के बारे में, आर्टिकल्स पढ़ना, गूगल अलर्ट लगा दिया, उस तरह की चीजें 2015 में शुरू कर दी थी। 2016 में मेरा प्रमोशन बोर्ड हुआ, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट प्रमोटेड। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया दैट आई मस्ट डू अ PhD बिकॉज एकेडमिक्स हैज बीन माय स्ट्रेंथ ऑल अलोंग। तो मैंने एक तो अपनी बुक लिखना शुरू की, विच आई स्टार्टेड इन February 2017, completed in October 2019। वो मैंने बुक लिखी, और साथ मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे मैं PhD कर सकूं। तो उन्होंने मुझे NDU में भिजवा दिया। बाय देन मैं अपनी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK में एडमिशन सिक्योर कर चुका था फॉर डूइंग अ PhD देयर। लेकिन इशू ये हुआ कि वहां पे इट वाज वेरी कॉस्ट प्रोहिबिटिव फॉर मी। इनिशियली उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको 50% बर्सरी देंगे, जो टोटल अमाउंट थी दैट वाज 55,000 पाउंड, तो मैं 27,000 पाउंड पे करूंगा। लेकिन बाद में आई डू नॉट नो फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द UK, दे सेड कि यूनिवर्सिटीज डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स, so we will not be able to give you bursary. So then I declined because it was very heavy amount, 55,000 pounds. So I shifted my PhD to NDU. So 18 में मैंने शुरू की PhD, और मैंने अपना जो कोर्स वर्क मेरा किया, एंड मीनवाइल आई वाज पोस्टेड टू GHQ वंस अगेन। बट उस वक्त तक मैं अपना कोर्स वर्क कर चुका था और अपनी मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने जो देखा कि CPAC is going to be a very important and challenging change which is coming up on the way of Pakistan। और मेरी ये थॉट थी कि जबकि हम इससे पहले बहुत लंबा अरसे के लिए हम एक उस रूट पे रहे हैं विच वॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फाइटिंग, नाउ वी आर गेटिंग ऑन टू द रूट विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और मेरी सोच थी कि CPAC ने जो मेजर फंक्शनल एरियाज हैं पाकिस्तान, उन सारों को इम्पैक्ट करना है। और वो क्या क्या है, उसमें सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सोशल सेक्टर है, एनवायरनमेंट है। तो वाइल आई वाज एट ISRA, मैंने आई कैरिड आउट अ प्रोजेक्ट विच वाज CPAC अ रियलिटी चेक। तो इन सारे 5-6 डोमेन्स में जिसमें मैं समझता था कि CPAC पाकिस्तान की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करेगा, आई पिक्ड अप सिक्योरिटी, कि मैं सिक्योरिटी को देखूंगा कि हाउ CPAC जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा। तो जब मैंने आगे मजीद चलना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक ये है कि CPAC जब बन रहा होगा तो वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि CPAC बने, वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि चाइना राइज करे, वो फोर्सेस जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ग्रो करे, वो जो है इसमें हर्डल्स क्रिएट करेंगी।
सो मेरी कंटेंशन ये थी कि सी पैक के बनने के प्रोसेस में हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस एग्जैसबेट होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन वाज कि अगर हमने सी पैक को सक्सेसफुली कर लिया तो ये हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, बिकॉज आवर फ्यूचर सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आई हैव बीन सेइंग वेरी ओपनली कि while in 80s nuclear weapons ensured our security against existential threat, फ्यूचर में आर सिक्योरिटी लाइज इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और कहीं अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि हम इकोनॉमिकली इतने अनवाइबल हो जाएं कि न्यूक्लियर वेपन्स दे बिकम रिडंडेंट एज इट हैपेंड इन केस ऑफ रशिया। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट पिक किया सेल्फ कॉन्शियसली, नोबडी आस्क्ड मी टू डू इट, बट मेरा ख्याल था कि मैं अपने नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बाय क्रिएटिंग अ नॉलेज कि हमने सीपैक को कैसे हैंडल करना है। मैंने सीपैक को जो थ्रेट्स थी वो आइडेंटिफाई की। द फर्स्ट थ्रेट दैट आई आइडेंटिफाइड दैट वाज इनस्टेबल और अनस्टेबल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हमारा सीपैक जेपरडाइज होगा। सेकंड जो मैंने आइडेंटिफाई की दैट वाज कोर्सिव यूएस। यूएस हमें कोर्स करेगा कि हम चाइना से दूर जाएं। थर्ड जो मैंने आइडेंटिफाई की थी दैट वाज बेलिजरेंट इंडिया, कि इंडिया हमें चैलेंजेस पोज करेगा थ्रू ऑपरेशन, थ्रू वेरियस चैलेंजेस का हम उस डायरेक्शन में ना जा सकें। फोर्थ वाज आर इंटरनल थ्रेट्स which involves multiple like corruption, incompetence, uh, lack of organization, lack of ability, and you can name a lot. There are many. मेरे नजदीक अहमद इस वक्त चारों थ्रेट्स जो है ना दे आर इन प्ले। द यूएस इज क्रॉसिंग अस, इंडिया इज स्टेयरिंग इनटू आवर आईज, इज क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज राइजिंग इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अंदर के जो हमारे हालात हैं वो आपके सामने हैं, किस तरीके से हम इन फाइटिंग में पड़े हुए हैं। तो मेरा ये कंसिडर्ड थॉट है कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में वी आर कंफ्यूज्ड। आपने अभी डॉक्टर मलिया लोधी का जिक्र किया, वी वर टुगेदर ऑन अ वेबिनार, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि पाकिस्तान इज कंफ्यूज कि हमने क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेनी है। इस वक्त मेरे नजदीक दो बैटल्स हो रही हैं पाकिस्तान की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। वन इज आउटसाइड पाकिस्तान एंड सेकंड इज इनसाइड पाकिस्तान। आउटसाइड पाकिस्तान है कि पाकिस्तान किस कैंप में होगा, दैट इज यूएस कैंप और चाइनीज कैंप। इनसाइड पाकिस्तान है बिटवीन स्टेटस को एंड नॉन स्टेटस को फोर्सेस। स्टेटस को फोर्सेस कहती हैं कि पाकिस्तान उसी तरह चलेगा जैसे 75 साल से हम चला रहे हैं। नॉन स्टेटस को फोर्सेस कहती हैं कि नहीं, पाकिस्तान को बदलना है एंड वी हैव टू टेक अ न्यू रूट। तो ये वो जो बैटल्स हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान को शैकल किया हुआ है। द वे थिंग्स आर ओपनिंग, आज मतलब आई शेयर्ड समबडीज ट्वीट, ही इज अ यूएस स्कॉलर जिसने एनालाइज किया कि हाउ यूएस इज डिक्लाइनिंग इन इट्स पावर। मैं अक्सर रिलेट करता हूं कि जो सबसे बड़ी बात है किसी भी सुपर पावर की, वो रिट होती है कि हाउ मच रिट दैट सुपर पावर हैज ऑन द वर्ल्ड। 1991 में once Elder Bush launched war against Iraq, whole world was with him. 2021 में once younger Bush launched attack against Iraq, half of the world was with him. 2017 में जब Jerusalem resolution pass हुई, nobody was with the US. Now just see how the writ of the US is declining. And the country like Saudi Arabia, that is also finding a new direction which is favorable to them, rather than continue to hinge on to the US. पाकिस्तान का ये हाल है कि हम अभी तक हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी डायरेक्शन क्या है और हमारे लिए बेहतर क्या है। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वी आर लूजिंग लॉन्ग टर्म गेन्स। And so tell us, Jan Sahab, so Ukraine, दो चीजें, एक in the context of Pakistan, CPEC, the China-America rivalry, how do you see what has played out in Ukraine? And then this peace between Iran and Saudi Arabia that is brokered by China. तो इसको आप किस नगाह से देखते हैं in this great game between US and China? देखिए, जो इस वक्त there are two main blocks, एक है ईस्टर्न ब्लॉक और एक है वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक इज NATO, which comprises US and EU. Eastern bloc is Russia and China. तो ये जो कंटेस्टेशन चल रही है बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसको ईस्टर्न ब्लॉक को वेस्टर्न ब्लॉक ने कन्फाइन किया हुआ है।
ये जो रशिया एंड चाइना है, इसका जो नॉर्थ है वो तो फ्रोजन है, उस तरफ तो ये निकल नहीं सकते। जो इसका ईस्ट है उस साइड पे नाटो बैठा हुआ है, उन्होंने उसे चेकमेट किया, उस तरफ ये निकल नहीं सकते। जो इसका वेस्ट है उस साइड पे यूएस है, उसके ऊपर क्वाड क्वाड है, उसके ऊपर ऑकस है, उसके ऊपर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उस साइड से भी ब्लॉक किया हुआ है। सो देर इज अ कंटेस्टेशन विच इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। तो यूक्रेन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस कंटेस्टेशन, कि नेटो जो है वो स्क्वीज कर रहा है। इट स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ रशिया। सो अभी चंद दिन पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नेटो को, स्वीडन इज वाइंग टू ज्वाइन नेटो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे आर, वो घेरा तंग कर रहे हैं ईस्टर्न ब्लॉक के इर्द गिर्द, जो कि विच वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रशिया। रशिया बड़े अरसे से कह रहा था, क्रीमिया वाज आल्सो अ वॉर आउट ऑफ द सेम कंटेस्टेशन, यूक्रेन इज आल्सो वॉर आउट ऑफ द सेम कंटेस्टेशन। तो मेरे नजदीक जो वेस्ट है, दैट वाज प्रोडिंग और प्रिकिंग एट रशिया टू डू समथिंग। सो यूक्रेन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस कंटेस्टेशन। इसमें कोशिश की गई कि यूक्रेन को रशिया के लिए एक अफगानिस्तान बना दिया जाए। अभी कल को क्या आउटकम आता है, जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न ब्लॉक इज मैनेजिंग टू प्रिवेल इन यूक्रेन, वेस्टर्न ब्लॉक इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, और ये हमें नजर आ रहा है आइंदा को किस तरीके की चीजें अनफोल्ड होती हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो दिस इज एज फार एज द यूक्रेन इज कंसर्न। सो ये जो बड़ी पावर्स हैं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए जो छोटे मुल्क हैं उनको तबाह करवा देते हैं। यूक्रेन वॉज अ ब्यूटिफुल कंट्री फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, वीट एटसेट्रा, लुक एट इट कि उसका हालत क्या हुआ। अफगानिस्तान वॉज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज इन आवर रीजन। तो कहते हैं कि वो जो अफगानिस्तान इज ग्रेट ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लेकिन इस प्रोसेस में अफगानिस्तान खुद ग्रेवयार्ड बन गया। तो दे हैव गेन नथिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ये जो कंटेस्टेशन है बिटवीन द यूएस एंड चाइना, इसमें जाहिर है मूव्स हो रही हैं। चाइना जो है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आई रेड समवेयर कि जो वेस्ट का स्ट्रेटेजिक थॉट है वो 3 कार्डिनल पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है। वन इज डिवाइड एंड रूल, सेकंड इज एथनिक क्लींजिंग, एंड थर्ड इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ द वेस्ट इज बेस्ड, और उसको हम आज भी देख रहे हैं। वेस्ट का क्या कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरबिया आपस में लड़ें, सो दैट इज डिवाइड एंड रूल, दैट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। चाइना जो कह रहा है, वो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजिक थॉट लेके आ रहा है, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन 3 कार्डिनल पॉइंट्स, दैट इज विन विन कोऑपरेशन, म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन। उसकी मैनिफेस्टेशन हमें ग्राउंड पे नजर आना शुरू हो गई है कि चाइना ने 2 राइवल्स को बैठा के उनकी लड़ाई आपस में खत्म करवा रहा है। तो बीआरआई जो है, जिसका आपने जिक्र किया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक फेवरेबल और कॉन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ रहा है, चाइना सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा है, कोई और किसी और के साथ लड़ रहा है, तो बीआरआई नहीं हो सकता, म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती, विन विन कोऑपरेशन नहीं हो सकती। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर चाइना जो है वो प्रैक्टिकली अपना जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसको अनफोल्ड कर रहा है। ये जो आपने बात की है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 पिलर्स ऑफ वेस्टर्न इंटरवेंशन एंड देन द 3 पिलर्स मोड है ना, एक मोड ऑफ इंटरवेंशन है। वन इज अ बिट मोर एडवर्सेरियल मैकियावेलियन आई वुड से, डिवाइड एंड रूल का, एंड द अदर वन इज मोर विन विन एंड कोऑपरेशन। एंड आई थिंक सीपेक का, एंड यू नो सीपेक की एक्चुअली बेनिफिट तो आना था जब इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होनी थी। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज लाइक द डिपॉजिट, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज द डिपॉजिट। But what was going to happen through cooperation of Chinese businesses and Pakistani businesses to make Pakistan more competitive? हमारा तो बड़ा मसला, हम competitive है नहीं है, मगर वो चाइनीज के साथ मिल के अगर हम competitive हो जाते तो really the industrial development, the economic prosperity जो पाकिस्तान में आनी थी वो unfortunately वो आई नहीं, मगर वो बहुत ज्यादा होनी थी। देखिए, मैं ये कहता होता हूँ कि जो द नेचर ओनली प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी, आप अपनी काबिलियत से उसको ब्लेसिंग बना लें या अपनी नलायकी की वजह से उसको कर्स बना लें, दिस इज इन योर हैंड। नेचर हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी विच इज ऑफ सीपैक।
जो मेरे नजदीक इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अगर एक इंडिविजुअल के सामने दो रूट है, एक है विच इज ऑफ डिस्ट्रक्शन, फाइटिंग एंड मेहम, दूसरा है विच इज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप डिस्ट्रक्शन वाले रूट को छोड़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले रूट पे चलना शुरू हो जाएं, even if you gain zero on this new route, you are still saving that 40% which you were losing on the route of destruction and fighting. हम रहे हैं उस रूट के ऊपर which is destruction, fighting and mayhem. तो वो जो है वो उससे we have to transit to the other route. ये लाइट ऑन कर, we have to transit to the other route. इसमें मैं समझता हूं कि हमारी लायकी है कि अगर हमने अपने एग्रीमेंट्स अपनी उस तरीके से ना की कि वो जो है वो सी पैक इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ ब्लेसिंग बिकम्स अ कर्स। नाउ लेट मी रिलेटेड टू अनदर एस्पेक्ट। स्वेज कैनाल हम स्टडी करने गए फ्रॉम एनडीयू, और द पर्पस वाज दैट स्वेज कैनाल इज आल्सो अ कंडुइट व्हिच इज ऑन द सी। CPEC is also going to be a conduit, but it is going to be on the land. एक पैसेज है। Very interesting concept. स्वेज कैनाल जो है उससे जो ट्रेड उधर से गुजरती है, आई एम टॉकिंग ऑफ 2018 नाउ, जो उस वक्त हमें बताया गया जो ट्रेड गुजरती है स्वेज कैनाल से, दैट इज समथिंग लाइक $1,650 बिलियन, $1,650 बिलियन की ट्रेड गुजरती है स्वेज कैनाल से। इजिप्ट को इसमें से क्या मिलता है? $5 बिलियन, विच इज 0.3% ऑफ दिस ट्रेड। तो किसी ने उस वक्त ऐसे एग्रीमेंट्स किए कि स्वेज कैनाल इजिप्ट के लिए ब्लेसिंग की बजाय कर्स बन गई। अगर हमने भी इसी तरह के एग्रीमेंट किए तो एज वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैड सेड कि जी हम पंचर लगाएंगे और चाय पिलाएंगे, तो वी कैन आल्सो एंड अप टू दैट। अपॉर्चुनिटी इज नॉट बैड, the way we handle that opportunity, that is the problem. So I think absolutely, and I do think CPEC was investing in Pakistan 2014-15 when nobody was investing in Pakistan, and ultimately we need to make contracts which are in our interest. मगर जो आप बात कर रहे हैं यूएस की, I do think Jamal Sahab, if you would like to comment on that, US has decided that it will by any means thwart the rise of China. So when and I do think that that there was a trap that was laid for Russia in Ukraine, and it did walk into it. And once that happened, nuclearing or your nuking is not necessarily a nuclear weapon. You can do a financial nuking of a country by cutting them off from SWIFT, global payments. You can call it a financial nuking, or you can call it a digital nuking when you cut them off from all social media. RT went off Twitter, all of these things that happened. So clearly the US had decided that it is going to do what it can to stop both the rise of Russia and China. And that has started from Ukraine. And I'm sure that's going to play out in Pakistan to some extent. And that's not good news for Pakistan. Ahmed, have you heard about Thucydides trap? Yes, I've heard of it. It was my professor, Graham Allison, who came up with that. But please do tell us about it. Okay, Thucydides was a Greek scholar who had said that an emerging power will always be seen as a threat by the established power. So established power as of now is the US, and emerging power is China. और Thucydides ये कहता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो जंग होगी। तो ग्रैम एलिसन जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इफ आई करेक्टली रिमेंबर, देयर हैव बीन 16 टाइम्स जहां पे के ये चेंज ओवर हुआ है, और उन 16 टाइम्स में से 11 टाइम में या 12 टाइम में जंगें हुई हैं। सो इट इज ओनली 4 or 5 टाइम्स के जहां पे जंगें नहीं हुई। दिस वाज पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड पावर टू एन इमर्जिंग पावर। तो ग्रैम एलिसन की बुक भी इसी पे है, Thucydides trap, how the word can save itself, is destined, or whatever the title मुझे याद नहीं। Now the point is कि the word is holding its breath that there is no war this time between the US and China. जो war है वो over period of time अपने character को change करती रहती है। जैसे आपने कहा कि it is not necessary कि war उस domain में हो जो हम सोचते हैं।
कि तोपें चल रही हैं तो जहाज चल रहे हैं तो धमाके हो रहे हैं, नॉट नेसेसरी। ट्रेड वॉर इज ऑल्सो अ वॉर। जो आपने बात की है जो है वो आईटी की न्यूकिंग, दैट इज ऑल्सो अ वॉर। सो देर आर वेरियस मीन्स अभी अवेलेबल हैं टू सबड्यू योर एनिमी। तो ये जो कंटेस्टेशन है ये तो फोर्सीन थी, प्रिडिक्टेड थी, ये तो होनी ही होनी है। यूएस विल नॉट लाइक टू लेट चाइना राइज ट्रबल फ्री। तो उसके लिए यूएस की इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू एज अ रीजनल पावर टू कंटेस्ट चाइना। तो ये तो होना है। तो दैट इज वाई जो मैंने आपने पहले जिक्र किया था कि सी पैक को कौन सी थ्रेट्स हैं, जिसमें मैंने कोर्सिव यूएस कहा, मैंने बेलिजेंट इंडिया कहा, मैंने अनस्टेबल अफगानिस्तान कहा। जब यूएस अफगानिस्तान से निकला है तो मैंने उस वक्त एक ब्लॉग लिखा था, इज इट चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब ये होता है कि आई एम लॉस्ट एंड आई एम गोइंग बैक अप, दिस इज चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी ये होती है कि आई एम पैकिंग अप बट मेरे ऑब्जेक्टिव अभी भी इंटैक्ट है, आई विल यूज सम अदर मीन्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये यूएस की चेंज ऑफ हार्ट है या चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। और मैंने जस्टिफाई किया था कि द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस, यूएस विल नॉट अबंडन दिस रीजन बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द राइज ऑफ चाइना। सो मे बी यूएस माइट हैव थॉट कि मेरी डायरेक्ट प्रेजेंस मुझे कॉस्ट कर रही है $X, whereas X by 4, 1/4 of same amount, I can create similar kind of results by investing on the non-state actors which are prevalent in this region. So मुझे ऐसा फील हुआ था कि मे बी दे आर जस्ट चेंजिंग देयर स्ट्रेटेजी टू अचीव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कंटेस्टेशन होगी। जो बीआरआई का आपने जिक्र किया, मैंने अपनी पीएचडी में आइडेंटिफाई किया था कि सी पैक, देयर आर टोटल 6 कॉरिडोर्स ऑफ बीआरआई। उनमें सी पैक स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर कॉरिडोर्स। आई कैन एक्सप्लेन माई रीजन फॉर दैट, व्हाई आई से दैट। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था सारे कॉरिडोर्स का इन माई पीएचडी कि व्हाई डू आई से दैट सी पैक स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव रेस्ट ऑफ द कॉरिडोर्स। तो मैं आपको ये एक वो इक्वेशन दे रहा हूं। इफ देर इज नो गवादर देर इज नो सी पैक, इफ देर इज नो सी पैक देर इज नो बीआरआई, इफ देर इज नो बीआरआई देर इज नो राइज ऑफ चाइना। क्योंकि जो मौजूदा जोग्राफी है चाइना की, वो एज पर रॉबर्ट जॉर्ज फ्रीडमैन, नेक्स्ट 100 years China is inhibited to become a superpower because of limitations of geography. It has long, circuitous, cost prohibitive, vulnerable sea lines of communication through South China Sea. तो जी, मलाका डायलेमा। सो जॉर्ज फ्रीडमैन कहता है कि मौजूदा ज्योग्राफी में चाइना सुपर पावर बन ही नहीं सकता। तो जस्ट इमेजिन कि एक कंट्री इज वाइंग टू बिकम सुपर पावर, उसकी ज्योग्राफिक लिमिटेशन इज नॉट अलाउइंग हिम और इनहिबिट करती है उसे सुपर पावर से। सी पैक इज हेल्पिंग टू मिटिगेट दो ज्योग्राफिक लिमिटेशन। चाइना बिकम्स फ्रॉम वन ओशन कंट्री टू 2 ओशन कंट्री। अगर चाइना का एक डोर बंद होता है तो दूसरा डोर उसका सी पैक में खुल जाता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन है। और मैं कहता होता हूं कि अगर चाइना 60 to 70% अटेन कर रहा है फ्रॉम सी पैक, पाकिस्तान इज अटेनिंग 30 to 40%, बिकॉज हमारी गेन इज ओनली इन इकोनॉमिक डोमेन, उसकी गेन इज इन स्ट्रेटेजिक डोमेन, एंड देयर आर मेनी अदर्स आल्सो। सो सी पैक जो है वो उस लिहाज से बहुत क्रिटिकल है। और मैंने उस वक्त आइडेंटिफाई किया था कि सी पैक विल नॉट गो अनकंटेस्टेड। सी पैक को रोकने के लिए हर लिहाज से कोशिशें की जाएंगी। आपने भी वही आइडेंटिफाई किया है दैट द यूएस विल ट्राई इट्स अटमोस्ट। इंडिया ने आई थिंक 2015 में कहा था कि मैंने $500 million अलग कर दिए हैं सी पैक को रोकने के लिए। कभी वो जीबी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी वो बलोचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Gulbashan Yadav was a product of a center which was established in Chabahar, who was apprehended in 2012 or so, or I'm forgetting the year. तो उसका पर्पज यही था टू क्रिएट अनरेस्ट इन बलोचिस्तान। सो ये तो होना ही होना है। नो जो इट इज अप टू अस, चाइना एंड दोज फोर्सेस जिनको मैं कहता हूं कि दे आर इनेबलिंग फोर्सेस फॉर द चेंज टू अकर, कि वो कैसे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जिसमें यूएस और इंडिया है कि उनकी पावर को मिटिगेट करते हैं। And I think that's very right. I mean, even within Pakistan, I know for a fact the FPCCI,
the chambers of commerce has opposed CPEC because they see they're gonna have to become more competitive than before, and they don't want that. They don't like that. They like to be in the protected government protections through lobbying rather than face market competition, which Chinese businesses would have done it. They have opposed it. There were a lot of internal factors, internal lobbies that were against CPEC. So yes, there are multiple factors against it. देखिए बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको एक और एस्पेक्ट देना चाहूंगा कि जब आप एक परसूट अंडरटेक करते हैं तो सबसे पहले आप अपना नॉलेज बेस बिल्ड करते हैं, चाहे ये इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। मैंने अगर घर बनाना है तो सबसे पहले मैं अहमद जलाल के पास जाऊंगा कि यार मुझे बताओ हु इज द गुड आर्किटेक्ट। निमरा काजी वाज वन ऑफ योर क्लास फेलोज। आई विल आस्क फ्रॉम समबडी के हु इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, हु विल डू बेटर कंस्ट्रक्शन। तो मैं अपना नॉलेज बेस बिल्ड करूंगा। सीपैक जो है ये एज ऑफ नाउ आई कैन से कि पिछले 30 साल से दिस वाज अ हिडन अरेंजमेंट अंडर द कार्पेट गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान कि हमने इस तरह का कोई वेंचर करना है। एंड्रयू स्मॉल कॉल्स इट एज अ कॉपरेशन इन शैडोज कि ये दोनों मुल्क 20 साल से अंडर द कार्पेट लगे हुए थे, दुनिया को नहीं पता था दे आर वर्किंग ऑन दैट। आप मुझे बताएं अहमद कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, शुड पाकिस्तान बिल्ड इट्स नॉलेज बेस कि सीपैक क्या करेगा? जब होगा तो क्या होगा? बिलीव यू मी, वी आर सो केयरलेस, वी आर सो इनडिफरेंट, वी आर सो केयरलेस कि चाइना manages to produce something like 500 PhDs on CPAC. Pakistan produces first PhD in 2022. Wow. Wow. No, this is how we are dealing with this project. ये वो वजह है जिसके लिए आपको एक स्टेज पे पता चलता है कि चाइना हमारी बच्चियों से शादियां करना शुरू हो गया है, तो आप बंद बांधते हैं। फिर आपको पता चलता है चाइना ने हमारी जमीनें खरीदना शुरू कर दी हैं, फिर आप बंद बांधते हैं। आपके जो नेगोशिएटर्स हैं वो आर ऑन द टेबल, उनके पीछे लोग बैठे होते हैं who have the knowledge, so they come and whisper into their ear कि please don't do this, इसकी ये implications होंगी। In the absence of that knowledge which has to come from the rear, of course you will have very lopsided deals। और अगर आप खुद तैयार नहीं है और दूसरा आपका फायदा उठा रहा है तो we cannot blame them, we cannot blame China, we should blame ourselves कि हमने मेहनत ही नहीं की। मैंने अपने इंटरव्यू पीएचडी के प्रोसेस में हारून शरीफ साहब को इंटरव्यू किया। He is a wonderful economist। उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो बिजनेसेस हैं, they are got used to function under the governmental coverage, under subsidies, under वो जो है क्या उसे कहते हैं concessions, इसे कहते हैं लाइसेंस राज कहते हैं, लाइसेंस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो they don't want to be in a competitive world। और मैं एक और जो टर्म यूज करता हूँ इन अ लाइटर नोट कि बुलेट चाइना इज अ बुलेट ट्रेन और उसके पीछे बोगी लग गई है शेख रशीद साहब वाली 1960s वाली। तो आई नेम हिम बिकॉज ही वाज रेलवे मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो ये जो बोगी है उसको बुलेट ट्रेन खींच रही है। ना यहाँ पे डिसिप्लिन है, ना यहाँ पे नॉलेज है, ना यहाँ पे वर्क एथिक्स है, ना यहाँ पे कोई वैल्यूज हैं। तो दैट इज द इशू एंड वी इफ वी सफर वी विल सफर बिकॉज ऑफ आवर इनकॉम्पिटेंस, नॉट बिकॉज ऑफ चाइना। देखिए ये मुझे किसी ने बताया था, मिस्टर शब्बर जैदी ने, कि व्हेन रिको डिक वाज बीइंग नेगोशिएटेड देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का माइनिंग का सेक्रेटरी और जो चिलियन और कैनेडियन कंपनीज देयर टॉप लॉयर्स, mining lawyers, they were negotiating. So you can imagine what would be the outcome. The outcome would be the huge fine that Pakistan faced when you have such knowledge, expertise, subject matter expertise, and very generalist, high level knowledge on the other hand. ये जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए setback रहा है throughout, and this is not CPEC related, ये उससे पहले भी बहुत रहा है। देखिए हारून शरीफ ने एक और चीज का जिक्र किया था। वो कहते थे जब हम वर्ल्ड बैंक से आते थे फॉर नेगोशिएशंस ऑन एनी इकोनॉमिक इशू, इफ वी वुड गो टू यूके तो वी वुड फाइंड कि दोनों साइड्स पे टेबल पे सिमिलर नॉलेज होता था। इफ वी वुड कम टू पाकिस्तान वी वुड फाइंड कि एक तरफ तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं who are just there for their position, otherwise knowledge is zero। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं एक और बुक रेफर करना चाहूंगा, क्या नाम है उसका, पराग खन्ना द फ्यूचर इज एशियन। उसमें वो कहता है कि वो कंट्रीज जो कि एशिया इज ग्रोइंग, 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी। वो कहता है कि वो कंट्रीज जहाँ पे आपने पहले भी उसका जिक्र किया था
जहां से ग्रास रूट से लीडरशिप राइज करती है टू द टॉप लेवल, दे विल बी इन स्टेप विद द ग्रोथ ऑफ एशिया. और वो कंट्रीज जहाँ पे पैराशूट से लीडरशिप आती है, दे विल लैग बिहाइंड. सो पाकिस्तान में यही इशू है कि उसकी मैं एक और चीज है जो मैं अलग आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि व्हाई आवर इंस्टीट्यूशंस हैवंट ग्रोन. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन or well prepared, well equipped to do these assignments. So CPEC की execution, we may be lacking really that capability and knowledge base to execute CPEC. चले वो एक तरफ, and that is a disadvantage. But मैंने भी बहुत if you look at history, policy consistency और एक line पे just following a certain path. So first you start in first gear, and then you go second and third, and eventually you get there eventually. But the problem that we face is that we have the disadvantages that you've mentioned, but we do not have policy consistency. जो CPEC के लिहाज से रही है. One fine day, we realized that there is a speech at a certain think tank last year, April, and completely we were told that actually the CPEC thing was not the right thing, and actually our culture and our history and our trade and our investment is more aligned with the West. And suddenly the whole thing turned around. That actually is as big, if not a bigger problem, a challenge with us achieving a long-term potential, because हमारे यहाँ policy consistency नहीं रहती है. अहमद देखें, हम लोग जब मिलिट्री स्ट्रेटेजी पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो हम ये कहते थे कि जो कोर है ना, कोर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन आर्मी. And a large size army may have 10 corps, 12 corps, 5 corps. So core is one of the main segments of army. तो हम ये पढ़ते थे कि कोर की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करना इज अ कोलोसल जॉब. अगर कोर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ईस्ट और मैं उसे कहूं कि नहीं मैंने इसको नॉर्थ की तरफ करना है, इट्स अ कोलोसल जॉब. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू डू. नाउ इमेजिन अगर यही एक नेशन के बारे में करता हो. मैंने जनरल बाजवा को जब मैंने लिखा था तो आई सेड, मैंने उसमें लिखा था कि 73 ईयर्स से वी आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वेस्ट. हमारी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट. हमारा ऑल द सिस्टम्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर. सडनली आपको पता लगता है कि आपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चाइना की तरफ करनी है. हाउ कोलोसल जॉब इट इज गोइंग टू बी. ये तो वो हैं जो हमारे जो जिनका मैंने जिक्र किया है. व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन, वेयर डू दे स्टडी? दे स्टडी इन वेस्ट. Yes. व्हाट अबाउट आवर लिंकेजेस, वेयर आर आवर प्रॉपर्टीज? दे आर इन द वेस्ट. तो इतना ये हार्ड होगा, कितना ये मुश्किल होगा फॉर मी टू चेंज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू चाइना. नो, दिस इज अ कोलोसल जॉब. आई मेंशन दैट. उसके लिए जरूरी था, मैंने आपको हाईलाइट किया है कि हमने सीपैक को नहीं पढ़ा. हमने सीपैक के ऊपर उस स्पीड से पीएचडी नहीं प्रोड्यूस की जिस स्पीड से लेट से चाइना ने की. नाउ सीपैक से अब उससे ऊपर है चाइना. चाइना को हमने कितना की पढ़ा है? क्या हमारा नॉलेज है अबाउट चाइना? हाउ डू दे फंक्शन? क्या उनका सिस्टम है? कैसे वो अपने बिजनेस को कैरी करते हैं? सो वी आर, ये हमारा एक चैलेंज है दैट वी हैव टू चेंज द. मैंने एक दफा एक लाइटर नोट कहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि seek knowledge even if you have to go to China. So we have taken 1400 years, but never too late. Never. So never too late. But it is a colossal job. ये मुश्किल होगा. हमारा कल्चर, मैंने उसमें अपने जो पीएचडी स्टडी में यहाँ तक आइडेंटिफाई किया था कि देयर विल बी अ थ्रेट टू आवर आइडेंटिटी. हम अपना तशख्खुस नहीं लूज करना चाहेंगे. बट देयर आर एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड. बेल्जियम, हॉलैंड, वेरी स्मॉल कंट्रीज, नो न्यूक्लियर पावर. They are part of EU, but they are maintaining उनका अपना तशख्खुस है. They are not, they haven't lost their identity. So रंग उस कपड़े को चढ़ता है जिसका अपना रंग कच्चा हो. जिस कपड़े का रंग पक्का हो उसको रंग नहीं चढ़ता. So we should not be really worried, and we should be able to maintain our identity and still function with China. Do you think China has lost interest in Pakistan? Do you think China feels that it needs a strong partner? Do you think China has lost interest in Pakistan and it needs a strong partner, and maybe Pakistan has or has not been in that sense? And look, I mean, CPEC in a way
the Iranian CPEC has become bigger, both in terms of investment and quantum. So do you think Pakistan has missed the boat on CPEC now because we have had setback and delays, or do you think we can still get back into it? No, what I would say कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि चाइना एक बुलेट ट्रेन और उसके पीछे एक बोगी लगी हुई है 60s वाली, तो चाइना को भी ये नजर आ रहा है कि मैं एक और स्पीड पे चल रहा हूँ. हियर इज अ कंट्री जिसमें कोई चीज इन ऑर्डर नहीं, नथिंग इज इन ऑर्डर. आजकल ये जो पॉलिटिकल टसल चल रही है, जस्ट इमेजिन कि 21st सेंचुरी में हमारे किस तरह के हरकत हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी परसूट्स हैं, हाउ वी आर कंडक्टिंग आवर बिजनेस. इट्स रियली अमेजिंग. और मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान इज फ्रोजन इन 18th सेंचुरी. हम तो अभी तक 21st सेंचुरी में एंटर ही नहीं हुए. नाउ हैविंग सेड दैट, I would like to quote Daniel Markey, who had said that failure of CPAC is a diplomatic and political impossibility. ये उसके अल्फाज थे. Failure of CPAC is a diplomatic and political impossibility. ये फेल हो ही नहीं सकता. चाइना जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉट वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान, और उसमें द प्रॉब्लम हम हैं. लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि चाइना के लिए ऑप्शन भी कोई नहीं. जो ईरान की आप जिक्र कर रहे हैं उसके अपने चैलेंजेस हैं. केकेएच को मैं कहता होता हूँ प्रील्यूड ऑफ सीपैक. अगर केकेएच इस वक्त ना होता तो फिर मैं दोनों प्रॉन्ग्स को इक्वल देखता कि उस साइड से भी जा सकता है, साइड से भी जा सकता है. लेकिन ये है कि केकेएच इज अ प्रील्यूड टू सीपैक. इन द प्रेजेंस ऑफ केकेएच, China will not like to lose the effort which has taken place, I think, couple of decades. 69 में ये inaugurate हुई थी, and start a new front. Number one. Number two, गवादर और चाबहार जो alternate port कही जाती है, उसकी cargo handling capacity का comparison ही कोई नहीं. If Gwadar can handle 400 million metric tons per annum, Chabahar can handle 25 million metric tons per annum. Okay. So just see the difference. So China, what I think China would like to do is, while keep working on various options, will wait for Pakistan to grow out of its internal strife, to grow in step with the world how things are going. हमें नजर आ रहा है ना, ईरान को वो दे रहा है $400 billion in 25 years, हमें दे रहा है $72 billion. सऊदी अरेबिया और ईरान को उसने इकट्ठा कर दिया. सो हमारे इर्द गिर्द चीजें इंप्रूव हो रही हैं, हम दरमियान में बैठे हुए हैं बिकॉज हमारा हाउस इज इन ऑर्डर नहीं है. तो चाइना विल वेट फॉर दैट टाइम once we realize ourselves that we have to put our house in order to be in step with the changing global and regional environment, और इंशाल्लाह ताला चीजें वापस आ जाएंगी. And in this, wrapping up this topic, but if we were to have a second go at CPEC, or if you had the choice to define the governance or implementation mechanism of CPEC, how would you do it differently from how it was done before? देखिए, पहला तो ये था कि जैसे मैंने कहा कि अभी भी अगर हमने टाइम लूज कर दिया है तो वी एट अ वेरी फास्ट पेस वी शुड प्रोड्यूस नॉलेज बेस. हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को बाउंड करना चाहिए. पहली तो बात है, वी हैव टू एक्सेप्ट, नंबर वन, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द सीपैक इज अ रियलिटी. अगर हमारे में अभी भी डाउट है कि यार सीपैक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही, देन हमारी मोटिवेशन नहीं होगी. अगर हम ये कन्विंस्ड हैं इसके ऊपर सीपैक इज अ रियलिटी एंड इट इज गुड फॉर अस, then we should work on war footing to create knowledge base. We should produce PhDs 15-20 every year on all various dimensions of CPAC. CPAC इंडस्ट्री को क्या करेगा, इकोनॉमी को क्या करेगा, सिक्योरिटी को क्या करेगा, इन्वायरमेंट को क्या करेगा, सोशल इन्वायरमेंट को क्या करेगा. वी मस्ट स्टडी ऑल दीज थिंग्स, नंबर वन. नंबर टू ये है कि ये नॉर्मल गवर्नमेंटल फंक्शनिंग से ये नहीं चल सकता प्रोजेक्ट. नॉर्मल मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, ये नहीं चल सकता. इट हैज टू बी गिवन अ स्पेशल हैंडलिंग, जिसके लिए जब मैं बीसीजीएस था तो कोशिश की गई थी कि एक सीपैक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए. पीएमएलएन वाज इन पावर एट दैट टाइम, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, दे सेड कि नो. पीटीआई केम इन, सीपैक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, अच्छी बुरी जैसी भी थी, द प्रॉब्लम्स वो बिसाइड द पॉइंट, but there was a development authority which was focusing on CPAC. PMLN दोबारा आई, दोबारा से डेवलपमेंट अथॉरिटी खत्म कर दी गई. 2016 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पाइट जो इंस्टीट्यूट है
उसमें एक थिंक टैंक बनाया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीपैक, 2016। 2020 में उसका PC1 खत्म हो गया, and now that think tank is lying redundant. Now, this is the kind of approach that we give to our projects, which is of national interest. So, if I am in the driving seat, if I have the option to do it, I will like to convince all my decision makers that this is the only option that we have. Having suffered for almost 75 years, Allah has sent us an opportunity. Please don't waste it. I was once briefing NSA, then NSA, General Nasir Jajua. तो मैंने उनसे दो सिनेरियो पेश किए थे. मैंने कहा 30 years from now, there are two possibilities. Number one, कि हम छोटी छोटी चीजों पे अकड़े रहे हैं और हमने सीपैक नहीं बनाया. नंबर टू, हमने छोटी मोटी चीजों पे कंप्रोमाइज किया, जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हुए कंप्रोमाइज किया था. प्रेसिडेंट जियाउल हक took an aircraft to India to avoid confrontation with India because he knew कि मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है वो सफर होगा. So same way, we'll have to do minor compromises and focus on CPAC. And I said कि अगर after 30 years there is a CPAC, to which option you will like to take? So देखिए, मैं आपको let me relate it to, एक तो ये है ना कि हम conflict prone area में रहे हैं, conflict prone route पे रहे हैं, हमें now we are being put on growth and development, उसमें भी conflict है because that will not go uncontested. लेकिन having said that, CPAC की advantage देखें, it will solidify our federation. हमारी फेडरेशन इज लूजली हेल्ड. कभी जीबी शेक करना शुरू कर देता है, कभी बलूचिस्तान शेक करना शुरू कर देता है. तो सीपैक क्या होगा? सीपैक विल बी लाइक अ बीम रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ दिस बिल्डिंग टू द सेकंड एंड ऑफ दिस बिल्डिंग. तो आपकी फेडरेशन सॉलिडिफाई होगी. वो लोग जो आज जीबी के ऊपर नजरें लगा के बैठे हुए हैं, वो नजरें हटा लेंगे कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक जीबी, बिकॉज इससे एक बहुत बड़ा एक रोड गुजर रही है which has significance for China. तो आपका फेडरेशन सॉलिडिफाई होगी, आपके एरिया में कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेट होंगे. आपका साउथ एशिया इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट इंटीग्रेटेड, मोस्ट impoverished, most conflict prone region of the world. 500 million people are living below poverty line. CPAC will do the Marshall Plan sort of a thing in this region. तो ये जो रीजन है साउथ एशिया, इसके जो मुल्क हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज, दे डू 6% ऑफ द ट्रेड अमंग्स्ट देमसेल्व्स एंड 94% ऑफ ट्रेड विद आउटसाइड वर्ल्ड. आप हालत देखें अपने रीजन की. ये जो हमारी जो टेलीफोन कॉल्स हैं विद इन द रीजन, दोज आर अराउंड 17%. फार ईस्ट में वही जो कॉल्स हैं, दोज आर अराउंड 71%. सो इस रीजन ने क्या इसी हालत में रहना है? अपनी लड़ाइयां, किसी की लड़ाइयां, किसी और के लिए लड़ाई, तो क्या हमारी तो हालत यही रहेगी. सो लेट गेट आउट ऑफ दैट साइकिल. आई वाज वंस एट रूसी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट व्हिच इज यूके. आई डिलीवर्ड अ टॉक ऑन सीपैक. मेरे सामने इंडियन डिफेंस अटैचे बैठा हुआ था यूनिफॉर्म में, ब्रिगेडियर. आखिर में मैंने कहा कि आई वांट टू लीव अ मैसेज फॉर माय फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, एंड आई सेड दैट इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, इंडिया शुड play mature. Either they should not contest CPAC or they should join CPAC. And I said कि मेरी reckoning में India is not treading on the path of fighting. He shrugged his shoulders and he challenged me that how can I say that? I said in Indian Ocean I can name 5 countries जिनकी एक पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है और दूसरी पोर्ट जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है. So there is a rivalry going on in Indian Ocean. This rivalry can anytime turn into hostility. ये जो चीज जब मैंने जनरल बाजवा को नरेट की तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डिड यू प्रेडिक्ट लद्दाख, बिकॉज लद्दाख की फाइटिंग उसके बाद हुई थी. आई सेड सर नो, आई डिड नॉट प्रेडिक्ट लद्दाख, बट आई डिड प्रेडिक्ट दैट इंडिया इज ट्रेडिंग ऑन द पाथ ऑफ फाइटिंग. देखें जलाल, इशू क्या है कि देयर आर टू belligerents. One is US and second is keeps on changing. Whenever these two belligerents fight, Pakistan becomes a conduit and Muslim fundamentalist becomes a fodder. This is what has happened in case of Anglo-British wars, Anglo-Russian wars, between US and Russia war, between war and terror. Two belligerents, Pakistan a conduit, Muslim fundamentalists a fodder. Now what is happening for 21st century?
फ्यूचर में जो दो बेलिजरेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, दैट इज यूएस एंड चाइना. हु इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू डू द डर्टी जॉब? इंडिया. Why we are keen to have that? वो अपना ढोल अब अपने गले में डालने के लिए क्यों बेताब है? Let India do that dirty job. India will fight the China. Pakistan should not do anything against the interest of China. उसको तैयार कर रहे हैं अमेरिका, हम कहते हैं तुम उधर बैठो, मैं अपना ढोल अपने गले में डाल देता हूँ. इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि अनवाइज एक्शन क्या होगा. ये जो बात आपने की है रशियन वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर एंड कराची was built as a city to support the war effort in Afghanistan. This is, I'm talking about the 18th century and 17th century. So absolutely, I think this is a fantastic quote that you said, that whenever there is a rivalry, a great game, Pakistan becomes the conduit and Muslim fundamentals become the fodder. और यही of course अफगान वॉर में भी हुआ था, वॉर ऑन टेरर में भी हुआ था. आपकी जो बातें हैं, I think the brilliance of it is quite holistic. It's just not national security centric, it's also economic, it's also anthropological and sociological, because one of the ways to create a nation away from a tribe is to promote internal tourism, the internal mingling of people, जो कि पाकिस्तान में अब हो रहा है ज्यादा. बट अगर आपकी सड़कें अच्छी बन जाएंगी, so one of the things would be people will go and see people from Balochistan, their culture, and from going into the northern areas. So ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटल पॉजिटिविटी और इंटीग्रेशन में इफेक्ट आएगा. लास्ट क्वेश्चन टू यू is, and always the problem is never outside, the problem is always inside. Who do we have to be as a nation, as people, कि ये जो great game होगी इसमें हम ढोल अपने गले में ना डाल लें, ठीक, and we are able to maneuver correctly the rivalry between the two, and also realize the potential of Pakistan, live in peace, live in prosperity, go on that path rather than of constant warfare. हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लानी चाहिए as a nation? मैं अहमद, जस्ट टू, बिकॉज बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है, तो दो तीन चीजें मैं जरा लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा फॉर यू टू लाफ आउट. मैं जब रूसी में था, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, तो वहां पे एक गोरा जो था ना, उसने मजाकन कहा कि हमें फिक्र है कि चाइना में राइड यू, चाइना में राइड यू. तो आई सेड टू हिम लाफिंगली कि for 50 years you have been riding us, let them also ride. So somebody else has the benefit. सेकंड ये था कि आई वाज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. वहां पे एक पाकिस्तानी प्रोफेसर थे, आई एम फॉरगेटिंग, तारिक मलिक, जो हमारे नादरा के जो चेयरमैन रहे, वो उनका छोटा भाई. उनको मैंने ये कहा कि मेरे नजदीक चैलेंज पाकिस्तान जो फेस करता है वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट हमें राइट को खींचता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमें लेफ्ट को खींचता है. उन्होंने मुझे कहा कि हु विल डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट? आई सेड यू मे डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज ही थॉट कि मैं आर्मी से हूं तो मैं डिफाइन करता हूं. आई सेड यू डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट. तो मैंने उनसे कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन, isn't it a national interest that people should be educated? He said yes. I said कि which Vadera, which Sai, which Sardar, which Malik wants that his people should be educated? Political interest says that people should not be educated. National interest says that people should be educated. Second, I said, isn't it a national interest that people should be secure? He said yes. I said Karachi is a city of 25 million people. 2.5 crore, million में, I hope I'm not going wrong. 2.5 crore का शहर है. And I said the police force of Karachi is 30,000. And this is not the data, my data, this is the data of AD Khaja. 30,000 police force, 50% of them are on protocol duties, बाकी रह गए 15,000. 15,000 का मैं कॉम्बैट पोटेंशियल मेजर करूं विज़ावी लंदन पुलिसमैन, तो मेरे 15 बंदे आपके एक के बराबर हैं. सो दैट मीन्स कि लंदन पुलिस के स्टैंडर्ड से 1,000 people are managing a city of 2.5 crore people. Who's to put it right? Political interest isn't there to put it right. So the point is कि जब तक हमारे national interest और political interest converge नहीं करेंगे at one point, national interest demands education, political interest demands education. मैं अपने इलाके में अगर कैडेट कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, who is the hurdle in my way? The MNA of that area. MNA of that area who doesn't want कि उसकी दुकान जो है वो बंद हो जाए.
सो दिस मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ हमारे सरदार बाहर हैं, कुछ हमारे सरदार अंदर हैं। जो बाहर वाले सरदार हैं वो यूएस और सऊदी अरेबिया है। दे आल्सो डू नॉट वांट दैट वी शुड गेट एजुकेशन, बिकॉज उन्होंने एक हमें रोल डिफाइन किया हुआ है जो फाइटिंग वाला है। तो हम अगर एजुकेट हो गए तो हम वो रोल कैसे अदा करेंगे? जो हमारा अंदर का सरदार है वो भी नहीं चाहता कि हम एजुकेशन अटेन करें। सऊदी अरेबिया builds mosque in Pakistan but doesn't build as university. Not a single university has been built by Saudi Arabia and Pakistan. So they also do not want कि हम educated हों. Now, coming to your question, and I'm sorry I've forgotten that question. Who am I? Who am I? Who are we as a nation? कि हम ये जो great power की game है, इसमें हम ढोल अपने गले में ना ले लें और हम यूज ना हो जाए, राइट ना हो जाए, हम अपने फायदे के लिए नेक्स्ट 50 to 100 years में पाकिस्तान को प्रॉस्परस एंड सिक्योर बना सके। देखिए, अगेन रेफरिंग टू द सेम पॉइंट जहां पे मैंने कहा था राजा पक्से मॉडल, hell with the word, what I will do what is good for my country. I am looking, I am yearning, I am craving for a leader, whosoever it may be, who comes and says whatever has happened. Future में I am going to take care of the interest of my country. I will not become part of others' wars. अभी now for example हम इसको आगे unfold करते हैं. What will US ask us to do if we stay at the US camp? US will ask us to roll back CPEC because it is against his interest. CPEC can help China rise, so CPEC is not in the interest of the US. US will ask us to move away from China. US will ask us to support US in case there is a war with China, as we supported US in case a war with Russia. आप मुझे बताएं कि एज ऑफ नाउ अगर तीन चीजों पे हम एग्री करते हैं. नंबर वन, द यूएस इज अ डिक्लाइनिंग पावर, चाइना इज एन इमर्जिंग पावर. ठीक है जी. नंबर टू, यूएस इज अ डिस्टेंट पावर, चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है. नंबर थ्री, यूएस हैज बिन व्हाट आई विल से डीबीएस, कभी स्टैब किया, कभी गले लगाया, कभी स्टैब किया, कभी गले लगाया. चाइना हैज बिन यूनिफॉर्म थ्रू थिक एंड थिन. इन तीनों चीजों के होते हुए क्या मेरे में अक्लमंदी होगी कि मैं उस घोड़े पे बैठ करूं विच इज डाउन द हिल एंड विच इज नॉट लोकेटेड इन माय रीजन. सो हैविंग सेड दैट, आई वांट टू बी एपॉलिटिकल, बीइंग एक्स आर्मी, बट सिंस आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई एम ऑब्जर्विंग माय पॉलिटिकल लीडर्स. व्हाई आई लाइक इमरान खान? Two reasons. Number one, he says that we can be friends for peace but not for war. That is my motto. That is what I had brought up in my PhD. We can be friends for peace but not for war. बहुत हो गई जंगें. मैं कहता हूं कि the world should give us break. बहुत हो गया है. Let us focus on our growth and development. Second part जो है कि he is the only one who is focusing on human resource development. वो कहते हैं जब अल्लाह ताला ने तुम्हें उड़ने के काबिल बनाया तो तुम रेंगते क्यों हो? और मैं रिसेंटली आई वाज एट गिलगित यूनिवर्सिटी. मैंने बच्चों को कहा कि आप अपने दोनों फाउंडिंग फादर से एक एक चीज उठा लें, उनके जो फरमुदात हैं. एक कायद आज़म से उठा लें, एक अल्लामा इकबाल से उठा लें, एंड योर सोसाइटी विल बी डिफरेंट. कायद आज़म से ये है कि वही जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट, देन टू योर प्रोविंस, देन टू योर विलेज, देन टू योर ट्राइब. मैंने कहा ये ठीक कर लें. और अल्लामा इकबाल से खुद ही का कॉन्सेप्ट उठा लें. एंड स्टूडेंट मुझे कहता है सर हम खुद ही इनकलकेट कैसे करें? मैंने कहा 2 नंबरों के लिए मिन्नतें मत करें अपने टीचर की. इफ यू डिजर्व, यू डिजायर. इफ यू डोंट डिजर्व, डोंट गो एंड बेग. सो ये वो 2 चीजें हैं जिसको हमने ग्रो करना है. And indeed, somewhat Imran Khan has that approach of come hell or anything, do whatever the interests of the country, and of course, absolutely not is part of it. And of course, when that happens and you take a stance, then you do have to face the consequences of it. But that is about leadership, and that is what you have to face. देखिए, बात यह है कि आपका एक नेबर है, उसमें एक अनवांटेड एलिमेंट घुस आया है. वो जो नेबर है उस अनवांटेड एलिमेंट को मार के बाहर निकाल देता है. आप कहते हैं उस अनवांटेड एलिमेंट को कि आप मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें कमरा देता हूं, यहां से स्टार्ट ऑपरेटिंग अगेंस्ट माय नेबर. तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट नेबर विल हैव अगेंस्ट यू. नो, इसी को रिलेट करते हैं अफगानिस्तान के साथ. यूएस वाज देयर,
US Afghanis that they have thrown US out of their country. We are keen to give space to US, come and have bases there and start operating against Afghanistan. What is the wisdom in it? US तो क्लोज करके चला जाएगा, पार्टली वो जा रहा है, कल को चला जाएगा, इनके साथ तो हमने रहना है. So why we do not have this kind of relationship with our neighbors? Because we are not sincere to them. तो मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा था, for God's sake, do not do this thing. That is provision of basis to the US. डॉलर्स को तो आपको चंद मिल जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत सुकून भी मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में यू विल बी अ लूजर. अभी जो कुछ आपने किया है, लेट्स सपोज एक एक्सट्रीम ये थी कि एब्सोल्युटली नॉट, नो बेसिस. दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आपने लेट्स से कोई इनिशिएटिव लिया, आपने कर लिया. व्हाट हैव यू गेन्ड? क्या यहाँ पे डॉलर्स की नहरें बह रही हैं? क्या डॉलर आपका 50 रुपए पे आ गया है? आपके डिफॉल्ट की जो सिचुएशन है वो तो ज्यादा स्फेयर हो गई है देन इट वाज बिफोर डूइंग दिस एक्ट. व्हाट हैव यू रियली गेन्ड? वो आपको मजीद से मजीद स्क्वीज कर रहा है. कभी कहता है अपने मिसाइल की रेंज कम करो, हो सकता है अंदर ये भी कहता हो सीपैक को रोल बैक करो. आपने गेन क्या किया है? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आई थिंक वी नीड टू थिंक. As I said कि I don't mind being written if we were to become like Germany. ठीक है, अगर हमें जर्मनी बना दे तो ठीक है, we accept it. But unfortunately that is not the role that they have in mind for us. नहीं देखिए, बात ये है कि नो डाउट कि इसमें West Germany. नहीं, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है. बट लीडरशिप से और डिमांड क्या है? टू स्टीयर द शिप थ्रू द चैलेंजेस. अगर चैलेंजेस की वजह से मैं रुक जाऊं तो फिर व्हाट इज आई एम नॉट वर्थ अ लीडर. जो ज़िया-उल-हक हैं उनके बारे में मतलब ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, बाकी चीजें साइड पे रख के हाउ ही प्लेड हिज कार्ड्स डेप्थली. ही अचीव्ड न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान. he achieved played a pivotal role in defeat of Russia. जो उसकी वजह से एल्स आए हैं वो अपनी साइड पे हैं. बट मैं अपने स्टूडेंट्स को एक दफा कह रहा था, आई रोट इट ऑन द बोर्ड, कि राइट डाउन द एल्स बिकॉज ऑफ ज़िया-उल-हक एंड positives because of Jalal. One positive of acquisition of nuclear weapons outweighs all the else, even if they are 25. अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता, 98 में आप ओवरटली न्यूक्लियर हुए हैं, 2001 में 9/11 हुआ है, अगर आप 3 साल लेट हो जाते, nobody would have allowed you to do it. So the point is leadership है यही, to steer your way through the challenges. और दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ लोग बदल रहे हैं, हम नहीं बदल रहे, हम उधर के उधर ही हैं. What are your parting thoughts on this whole topic, the discussion कि हमारी, what are your concluding thoughts on the discussion that we've had कि पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, सीपेक के बारे में, some parting or concluding thoughts you can share? देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा. नंबर 1, जब मैं पाकिस्तान को एनालाइज करता हूं कि why we are what we are in last 75 years, 2 मैं मेजर रीजंस दूंगा. नंबर 1, we lack visionary leadership. टर्की जो था, उनके फाउंडिंग फादर को 15 से 20 साल थे टू गिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू द कंट्री. हमारे फाउंडिंग फादर को एक भी साल नहीं मिला टू गिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू द कंट्री, सो ही पास्ड अवे. कायद-ए-आज़म ने खुद कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं. सो मैं ये कहता हूं कि कायद-ए-आज़म वाज टावरिंग पर्सनालिटी, बाकी लोग उनके ऊपर शायद की मक्खियां थी. तो वंस ही डिसअपीयर्ड तो हमारे पास वही लॉट रह गई जो पीछे थी. और उनका आप खोटे सिक्के कह लें, उनको आप शायद की मक्खियां कह लें. The only leader who was relatively better was Liaquat Ali Khan. Allah may bless his soul. 5th year of creation of Pakistan, he also left. So this is the environment जिसपे कि पाकिस्तान पला बड़ा है. दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि we repeatedly perform the role of mercenaries for the superpowers. तो ये जो prolonged conflict रहा है पाकिस्तान में, इसने हमें इकोनॉमिकली हमारे लॉसेस हुए हैं, ब्लड के लॉसेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस हुए हैं. सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो नेशनल कैरेक्टर का. ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. सो वी लॉस्ट आवर नेशनल कैरेक्टर. 40 years ago हमारा ये हाल नहीं था जो आज है हमारा. सो हैविंग सेड दैट, जब हम देखते हैं इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान को, पाकिस्तान में पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, हर जगह पे इस तरीके से होता है. पाकिस्तान एज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसको भी हमने अपनी एक कर्ज बनाया हुआ है, बिकॉज हमें इजी मनी मिल जाती है हर दफा.
उसके ऊपर हम मजे करते हैं, वी लैक मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। लेकिन ये कि जिस तरह के हमारे लोग हैं, मैं एक दफा कंपेयर कर रहा था चाइना को विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चाइना की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। हमारी इज एन ओपन सोसाइटी, हमारे यहाँ अंदर सोच की एक मतलब है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई उसके ऊपर बंदिश नहीं है। वो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल टाइप लोग हैं। तो इंडस्ट्रियल ज्यादा है, वी हैव मोर लिबर्टी ऑफ एक्शन, हम ज्यादा हमारे में इनिशिएटिव है। सो देर आर मेनी प्लसेस ऑल्सो। ओनली द क्वेश्चन इज इफ यू कैन हैव अ गुड लीडर हु कैन सेक्रीफाइस vested interest for the sake of national interest. So this nation has a tremendous potential. कायदे आजम ने 1948 में somewhere he had said that Pakistan will be the pivot state on the world map. 21st century में एंड्रियो क्रिप्को ने कहा है कि पाकिस्तान इज द पिवट स्टेट। अगर हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें और अपनी प्रायोरिटीज को ठीक कर लें, तो नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम इट्स राइटफुल पोजीशन। Thank you very much, General Samrez. It was an honor. It was a long discussion. So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us. I think we would go back to a couple of words that General Samrez mentioned. One was an intellectual soldier. Clearly, we got a soldier's perspective of security. But more than that, we got an intellectual perspective on much more than national security, on social, national cohesion, economic prosperity, which is very essential to create a cohesive national state. We also found out about national identity and why that is very important, because who we are and what is our character defines the choices that we make, defines the leaders that we elect, and defines the sacrifices both the leaders and the nation have to undergo or are willing to undergo in order to achieve greatness. If we remain a mercenary who are willing to get paid, whether it is in the Cold War or the Afghan War or in the war of terror, and not do the hard work, not build the intellectual infrastructure, not build the competitiveness, not build the internal cohesion, then of course the dream of Pakistan of greatness will not materialize, will not realize. So some of these great ideas on what to do in strategic cooperation with China, and also to be more clear and not be confused as a nation as to where our future lies. I think it was a fascinating discussion about the future, not only of Pakistan, but also of China, of the region. And this has helped us, hopefully, to all the listeners, gain more clarity and be less confused about where the priorities and the future of Pakistan must lie. So I thank General Samrez for his sharing his wealth of experience, knowledge with all of the audience, and hopefully this helps clarify our strategic compulsions. Thank you, and look forward to seeing you on the next session of the Alchemy of Transformation podcast.